सर मेरा सवाल पीओ जेके को लेकर है, जहां पर लगातार देखा जा रहा है कि प्रोटेस्ट मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन सर मेरा सवाल पीओ जेके को लेकर है, जहां पर लगातार देखा जा रहा है कि प्रोटेस्ट मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जिस तरह से ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान के रेंजर्स गोलियां चला रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, जाहिर तौर पे हमारा हिस्सा है। क्या कंसर्न्स हमारे हैं और क्या कोई एक्शन, क्या कोई स्टेप्स भारत की सरकार ले रही है? प्रणय। सर दो सवाल हैं। पहला तो मधुरेंद्र के सवाल को ही आगे बढ़ाना चाहूँगा। पीओजेके को लेकर हमारा स्टेटस क्या है? वो भारत का हिस्सा है, वहाँ के लोगों को लेकर भारत क्या मानता है और ऑफिशियल स्टेटस उस पर बताइएगा। दूसरी चीज़ ये कि कनाडा के अंदर एक फिल्म स्क्रीनिंग के दौरान, भारतीय एक हिंदी फिल्म स्क्रीनिंग के दौरान वहाँ पर हिंसा हुई है और उसके बाद फिल्म की स्क्रीनिंग को बंद किया गया है। कनाडा के अंदर हमारे तमाम रिश्ते अच्छे होने के बावजूद इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। साथ ही कनाडा ने हाल ही में बिश्नोई गैंग को जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है। जो 26 एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट थी, उनका लेटेस्ट अभी स्टेटस क्या है? आदित्य। So Aditya Raj called from NDTV. Firstly, on the Pakistan-occupied Jammu and Kashmir only, but there are more than a dozen people who've been killed. A lot of human rights violations. Also, there's a long march that's happening from Kotli to Muzaffarabad. So, what is the Indian government's reaction to the subjugation that's happening there? Second, recently India won the Asia Cup match, and we had Mohsin Naqvi, the Interior Minister, refusing to give the trophy to the Indian cricket team. How does India look at it? Will India diplomatically raise the issue somehow with Pakistan? Sahil. Sir, I'm Sahil Pandey from ANI News Agency. Sir, Bangladesh Home Advisor Jahangir Alam Chaudhary has said the violence in Kagrachari happened with the support from India and the fascist group. Any response from your side? Thank you. यही सवाल है क्या ब्रह्म आपका भी? दूसरा है पाकिस्तान पे है तो बता दीजिए, बोलिए। सर ब्रह्म प्रकाश जी न्यूज़ से मेरा सवाल है। सर अभी रक्षा मंत्री ने सरक्रिक को लेकर जो कहा है कि पाकिस्तान बॉर्डर के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, तो क्या जानकारी, क्या डिटेल है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान ने क्रिएट किया है और क्या इस मामले को डिप्लोमेटिक तरीके से भी भारत उठा रहा है? थैंक यू। Okay, first, Siddhant, coming to your question, we have seen reports on protests in several areas of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, including brutalities by Pakistani forces on innocent civilians. We believe that it is a natural consequence of Pakistan's oppressive approach and systemic plundering of resources from these territories, which remain under its forcible and illegal occupation. Pakistan must be held accountable for its horrific human rights violations. हमने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के कई एक इलाकों में विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टें देखी हैं, जिनमें पाकिस्तानी बलों द्वारा निर्दोष नागरिकों पर किए गए अत्याचार भी शामिल हैं। हमारा मानना है कि पाकिस्तान के दमनकारी रवैये और इन क्षेत्रों से संसाधनों की संगठित लूट का स्वाभाविक नतीजा है और इन क्षेत्रों पर उसका जबरन और अवैध कब्जा अभी भी बना हुआ है। पाकिस्तान को अपने भयानक मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराना जाना चाहिए। मधुरेंद्र, इससे आपका सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। प्रणय, आपका सवाल भी इसी के इर्द गिर्द था। जहाँ तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख का सवाल है, ये भारत के अभिन्न अंग है, रहेंगे ही, हमेशा से रहें। वहाँ के ये जो क्षेत्र है हमारा अभिन्न अंग है। हाँ, तो इसमें जहाँ तक आपका सवाल बिश्नोई गैंग को लेके है, देखिए अभी हाल ही में 18 तारीख को हमारे अपने
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की मुलाकात कनाडा के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से हुई थी। इसके बारे में मैंने आप लोगों को अवगत कराया था। दोनों पक्षों के बीच में अच्छी बातचीत हुई कि किस प्रकार से द्विपक्षीय मुद्दों पर, खासकर आतंकवाद के खिलाफ, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ दोनों देश काम कर सकते हैं, और साथ ही साथ किस प्रकार से जो सुरक्षा सहयोग दोनों देशों के बीच में चल रहा है उस पर और मजबूती कैसे लाया जा सकता है। इस मुद्दे पर और इन सभी मुद्दों पर दोनों देशों के बीच में, दोनों पक्षों के बीच में लगातार संपर्क बना हुआ है। The National Security Advisor had a meeting with National Security and Intelligence Advisor of Canada, Ms. Nathalie Drouin, on 18th of September 2025. I had given you details of this particular meeting, as also there was a press release, if I am not wrong. Both sides had held productive discussions as to how we can strengthen bilateral cooperation, especially in the areas of counterterrorism, transnational organized crime, and information or intelligence exchanges. They agreed to strengthen security cooperation and further enforce existing mechanisms of engagement. Both sides remain in touch on all these issues. Aditya, on your question on Pakistan occupied Kashmir, I have already answered it. On the question of regarding Asia Cup, I think it's a question which you must take to BCCI. They would be in a better position to answer. Sahil, your question regarding some of the allegations that were made in Bangladesh, we categorically reject these false and baseless allegations. The interim government of Bangladesh, as you are aware, and we've spoken about it on several occasions, is unable to maintain law and order situation in the country and has this habit of routinely trying to shift the blame elsewhere. It would do well for them to introspect and conduct serious investigations into the action of local extremists committing violence, arson and land grab against the minority communities in the Chittagong Hill Tract. जो कुछ बयान बांग्लादेश की तरफ से आया था, ये बिल्कुल निराधार है और हम इसको खारिज करते हैं। अंतरिम सरकार, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको, कि वहाँ पर कानून व्यवस्था को सुरक्षित करने में, संभालने में कमी रही है उनकी तरफ से, और जब भी ऐसा होता है तो देखा गया है कि वो दूसरे के ऊपर ये दोष ठहराते हैं। हमारा ये मानना है कि उनकी तरफ से कुछ इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए, और जो लोग इसके पीछे वहाँ हिंसा करने में और भी वारदातें जो वहाँ होती है, जबरन ज़मीन दखल करने के पीछे जो भी लोग हैं, जो भी एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये सब जितने जिस क्राइम की मैंने बात की, हिंसा की बात की, वहाँ पर जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं चिटगांव हिल ट्रैक्ट्स में, उनके खिलाफ होता रहा है। ब्रह्म सर्किट के मामले में अभी कुछ ही घंटों पहले मैंने देखा कि आपने भी देखा होगा, हमारे एयरफोर्स चीफ और हमारा आर्मी चीफ ने बातें की हैं इस पर, तो उन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया उसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ इस पर। This is Yeshi Seli from Business India. Afghanistan's foreign minister is expected to come to Delhi next week. Are there going to be conversations around the Bagram
also, is Prime Minister Keir Starmer expected to visit Delhi this month? Megha? Sir, a related question. When the foreign minister arrives of Afghanistan, Taliban arrives over here in India in the next 2 weeks, is India also going to raise concerns about this temporary blackout that was imposed with regards to telecom and internet? And my second question about the resumption of flights that is happening late October between India and China. Are there more such actions that are likely to happen for resumption of normalization of ties between India and China, whether it is people to people or trade? Firstly. Just adding to the question on the visit of the Afghan Taliban regime's interim foreign minister, is India considering shifting its position on recognition of the Taliban regime in line with what Moscow has done, given that you are now inviting him as an honored guest to Delhi? And will India raise issues of the treatment of minorities, the treatment of women and girls who aren't allowed to go to school in Kabul while he's here? I just also wanted to ask about whether the NEA has a statement on the US White House's Gaza plan, and if there is any conversation between Delhi and Washington about a role for India in the reconstruction. Smita Sharma, on the Gaza peace plan, we saw that initial reaction by Prime Minister Modi on a tweet, but there's a severe criticism that's coming in also from large sections of people saying this looks more like a real estate project, really not about Palestinian people. Questions being raised about Mr. Tony Blair with a very controversial past being in that board. Does India have a different view now that some time has passed of the fine print and the details that have emerged in that peace plan? Lakshmi. सर विजय लक्ष्मी हूँ इंडिया टीवी से। सर आसियान समिट में डोनाल्ड ट्रंप को बुलाया है अमेरिका के राष्ट्रपति को, क्या कोई बायलैटरल बातचीत भारत और अमेरिका के बीच में वहाँ पर संभव है? Okay, Yeshi, first to your question regarding the visit of Foreign Minister of Afghanistan. All of you would have seen the exemption that has been granted by the UN Security Council Committee for the travel of Afghan Foreign Minister to New Delhi from 9th to 15th of October 2025. Sorry, 16th of October 2025. This particular information is there in the public domain. We shall keep you updated in regard to in this regard. On issue on the visit that you talked about the UK Prime Minister, we'll make an announcement at the appropriate time. Megha, your question on the question of the visit of Afghan Foreign Minister, I have already answered. To your question about the flight to China, yesterday we had issued a
press release. And thereafter, I understand that commercial activity in this regard have started. You'll This is, of course, in line with the growing trend towards normalization in the relationship between India and China. On that, I already answered your question. What I had to have, what I had to answer. Firstly, again, on Muttaqi's visit, I have conveyed what I had to. I told you about the exemption that has been granted by the UN Security Council Committee for his travel to New Delhi, and we shall keep you updated in this regard. On Gaza plan, we have welcomed, as you would have seen, the Prime Minister has welcomed the peace plan announced by President Trump. On Smita, again, your Gaza peace plan, again, we have welcomed the plan, and that is where we are. Vijayalakshmi, आसियान समिट अभी कुछ दूरी पे है, कुछ देर बाद है, तो आपको सही समय पर और उचित समय पर हम लोग आपको जानकारी देंगे किस प्रकार का हमारी भागीदारी होगी उस शिखर सम्मेलन में. हुमा. I'm Huma Siddiqui from Stat News Global. I have recently EM had a meeting with the CELAC countries on the sidelines of UNGA, and he mentioned in his post on the Twitter that critical minerals and space cooperation along with other issues were discussed. Can you please share some more details about it? Okay. Good afternoon, Irina Tasnis Agency. My question is on Russian-Indian relations in the backdrop of yesterday's speech by Russian President at International Forum in Sochi. He, in his speech, in his answers to questions from the audience, highlighted the vast potential between India and Russia cooperation in economic cooperation. At the same time, he pointed that these hurdles which exist, like payment issues, logistics. So, how do you see to address these issues, especially when we are waiting for Russian president in India? And today also is the 25th jubilee, 25th anniversary of declaration on strategic partnership between India and Russia. So please some comment on this big jubilee. Okay. Abhishek. Sir, just wanted to know whether India sought travel exemption for Muttaqi's India visit from UNSC. Okay. Raghavendra. This is Raghavendra Verma from German television set here. My question regarding President Putin's same statement, he added something extra saying that